dear students, how are you? I hope all are you good. Today let me start SST chapter number 40 on equality. On equality means बराबरी, समानता होना, ठीक है? तो ये चैप्टर है समानता के बारे में, इक्वालिटी के बारे में. So learning outcome is equality in Indian democracy, challenge of democracy, issues of equality in other democracy. Equality is a fundamental principle in Indian democracy, enshrined in the Constitution of India. Human dignity is guaranteed in a democratic country. And since India is a democracy, it is quite relevant to study the concept and practice of equality in context of our country. तो जो हमारा भारत है वो इसमें क्या है, लोकतंत्र राज्य है, ठीक है ना. हमारे देश में लोकतंत्र मीन्स हमारे लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है. अब हम ही जो मतलब इंडियंस हैं, हमारे थ्रू ही सरकार चुनी जाती है, तो सबको इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार है. चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, सब वोट करते हैं, सब सरकार चुनते हैं, तो इक्वालिटी होनी चाहिए. ओके, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर्स एवरी पर्सन एज इक्वल. तो हमारे जो संविधान है उसमें लिखा है कि एवरी पर्सन, हर व्यक्ति जो है बराबर है, मतलब सब समान है, कोई अलग नहीं है. एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल्स एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर कंसीडर्ड इक्वल. Even after this inequality doesn't cease to exist, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is there, while earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. So now there are many laws that work to see that people are treated with dignity and equality. ठीक है, अगर हमारा संविधान ना हो और संविधान में कुछ चीजें लिखी हुई ना हो, है ना, तो क्या होगा, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहेंगे, इक्वालिटी नहीं रहेगी, एक दूसरे को परेशान करेंगे. तो कुछ हमारा लॉ जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलाउ नहीं है. दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो नंबर 1, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, है ना, कानून से पहले सभी लोग जो हैं बराबर हैं. What this means is that every person from the president of the country to Savita, a domestic worker has to obey the same law. Number 2, no person can be discriminated against on the basis of their religion. किसी को भी धर्म के अनुसार उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल, इवन वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. नंबर 3, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, पोर्टल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स. सो ऑल पर्सन्स कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग हट्स. नंबर 4, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड. ठीक है, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक जो यूज करने की चीजें होती है, सबको समान अधिकार है सारे चीजें इस्तेमाल करने का, चाहे वो होटल्स है, चाहे वो रोड है, चाहे प्लेग्राउंड है, एवरीथिंग. द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2 ways. नंबर 1, थ्रू द लॉ. अगर कोई ऐसे नहीं मानता तो कानून का सहारा लेना पड़ता है. नंबर 2, थ्रू सेवरल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स to assist the disadvantaged community. So in addition to these laws, the government has also introduced several schemes to improve the lives of disadvantaged communities. Okay, so midday meal scheme. One of the primary steps taken by the government is the midday meal scheme, जिसको बोला जाता है MDMS. This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide nutrition to children through cooked lunch. So Tamil Nadu was the first state in India to implement this scheme. And in 2001, the Supreme Court directed all the state governments to start this program in their schools within a period of 6 months. Okay, this program had many positive effects. For instance, more poor children have begun enrolling and regularly attending school. Teachers had been reporting that earlier children would often go home
for lunch and then not return to school. But now with the midday meal being provided in school, so their attendance has improved significantly. Their mothers who earlier had to leave their jobs to feed their children at home during the day now no longer need to do so. ठीक है, जो बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जिनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है कि बच्चों को फीड कराना है, खाना खिलाना है, लंच देना है, वो सिस्टम खत्म हो गया. बच्चा स्कूल में जाएगा, प्रॉपर वहां पे लंच करेगा, नाश्ता करेगा. दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प्ड इन द रिडक्शन ऑफ कास्ट प्रेजुडिस बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been given the charge to cook the meal. So the midday meal program also helps in reducing the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. While government programs play a significant role in increasing the equality of opportunities, तो इसमें जो है सबसे अहम भूमिका किसकी है? गवर्नमेंट की है, सरकार की है. There is much more that needs to be done. While the midday meal program has helped in increasing the enrollment and attendance of poor children's school, so there continues to be significant difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even though people are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle in which individuals as well as various communities in India should essentially and largely contribute to. Issues of equality in other democracies. It is disgraceful to live at the cost of one's self-respect. Self-respect is the most vital factor in life. तो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जो सेल्फ-रिस्पेक्ट, जो हमारा मतलब सम्मान होता है, आत्मसम्मान होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. विदाउट इट मैन इज अ चीपर. अगर ये नहीं तो व्यक्ति जो है बिल्कुल चीपर है. टू लिव वर्दली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफिकल्टीज. ठीक है, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो आपकी लाइफ बेकार है. इट इज आउट ऑफ हार्ट एंड सीजलेस स्ट्रगल एंड अलोन दैट वन ड्राइव्स स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन. Man is mortal. Everyone has to die some day or the other, but one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideals of self-respect and in bettering one's human life. So nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect. ठीक है, अब वही इंसान कामयाब है जिसके अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और बहुत जरूरी है. तो ये वर्ड्स किसके थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा छुआछूत और बहुत लोअर कास्ट का ये चीज़ें बहुत झेली थी. स्कूल में नहीं बैठने देना, कुएं पर पानी नहीं पीने देना, नल नहीं छूने देना, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को उन्होंने सहा है. इसलिए ये संविधान भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया था. इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, often reflecting social, economic, and political disparities. The truth is that in many democratic countries around the world, so the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. So, for example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. So this despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. So prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. So Rosa Parks, 1913, was an African-American woman tired from a long day at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man. On 1 December 1955, her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as the Civil Rights Movement. ठीक है, अब ये इनमें आपस में था अफ्रीकन अमेरिकन वाइट और ब्लैक का. अफ्रीकन ब्लैक होते हैं, अमेरिकन गोरे होते हैं.
तो वही ना कि जो गोरे होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस, तो ये चीज़ें हैं. रोजा पार्क्स एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विद वन डेफिनेट एक्ट. अब वो अफ्रीकन थी तो वो बैठी थी, अब वो पूरे दिन के काम से हारी थकी हुई थी, तो वो बैठी थी. जैसे कोई अमेरिकन चढ़ा तो सीट के लिए, तो उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी. ठीक है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखी कि मैं सीट नहीं छोड़ूंगी, सबको समान अधिकार है, सभी इक्वल है, चाहे कोई वो गोरा है चाहे काला है. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin. It also provided that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools that were specially set up for them. So, however, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. Most African American children can merely afford to attend government schools that have minimum facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either attend private schools or live in regions where the government schools are highly rated as private schools. Challenge of democracy. Now, no country can be described as a completely democratic country. However, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and demanding for a greater recognition of equality or existing as well as new issues. So, pivotal to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. Except from Article 15 of the Indian Constitution. तो Article 15 भारतीय संविधान का Article 15 क्या कहता है? Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Number 1, the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Number 2, no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to number 1, access to shop, public restaurants, hotels, and place of public entertainment, or number 2, the use of wells, tanks, bathing art, road, places of public resource, maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the जनरल पब्लिक. मतलब जितने भी ये चीज़ें हैं, टैंक है, बाथिंग घाट, रोड, प्लेस, सारी चीज़ें सभी समान रूप से इनको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा इसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा. ओके, सो द ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड here. I hope you all are very well understand this. We will meet you the next class. Thank you.